Hello everyone, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 21st and 22nd of September. The session will be quite interesting and important, so stay tuned with us till the end students. The session will be quite beneficial for you all for competitive exams. In this video we will be talking about Ministry of Ayush. They have launched a 5.26 crore initiative for the persons with disabilities. Then we will be talking about Piyush Goyal's visit to UAE. Then we will be talking about our country. India has been elected as a member of Interpol Asian Committee at the 25th Asian Regional Conference. Then we will be talking about a WTO report also. All these things and many more will be discussed here, so stay tuned with us till the end. Also students, if you are new here, do subscribe to us. We are one-stop solution for current affairs, and share the link of this video with your friends, cousins, relative, neighbor, and let them know about this interesting platform. Also, we upload the daily current affairs video at 5 a.m. in the morning on regular basis students, which is quite beneficial for you all, and the content provided here is in a very refined way that will help you for your competitive exams. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. Let's start with national affairs students. Ashwini Vaishnav has unveiled a logo and a flagship initiative for India AI Impact Summit 2026. This is the 4th edition of the International AI Symposium, right? During which this AI Impact Summit was held, right? So what are we saying about? We are talking about Ashwini Vaishnav ji. He has unveiled this logo and a flagship initiative for India AI Impact Summit, and this was the 4th edition of the International AI Symposium that was held. This summit was scheduled to be held from summit, or this particular summit, it is scheduled to be held from 19th to 20th of Feb in 2026, where at Bharat Mandapam. Right, and Ashwini Vaishnav, our Union Minister of MEITY, has unveiled the logo flagship initiative for the upcoming India AI Impact Summit, that is the 4th edition of the International AI Symposium. Right, so important thing, the 4th edition of it, location where this will be held, it will be held at Bharat Mandapam in the month of Feb in 2026. If we talk about this logo here, this logo is it contains Ashoka Chakra, right? And here during this we also saw some initiatives such as your AI pitch fest. Here Udan was launched, then will be launched, correct? Then here global innovation challenge for youth and women and other participants, then research symposium, AI expo, all these things will be talked about here. Right students, so take a note of this. Main focus will be AI, because this is the fierce topic and we are seeing that AI is being talked about everywhere. So here you can see, first is AI Pitch Fest Udan. This will demonstrate innovative AI startups from across the world and high potential ventures from tier 2 and tier 3 hubs of India. Then this global innovation challenge for youth, women and other participants. Then research symposium. Also students, you need to understand that with the help of AI, the research that you used to take, say for example on a particular topic, it used to take 1 year of research work, right, to get to a particular conclusion. But with the help of AI, the same thing can be done in just 1 to 2 days, right, or maybe even less, because the computation power of AI is very strong, right, and it can work 24/7 one thing, and it has a large database which it can process easily. Then next thing is your AI Expo. This is Expo for responsible intelligence that will feature over 300 exhibitors from India, and more than 30 countries will be participating here. Then apart from this, remember India has won the ICC Championship Trophy for 2025 and we defeated New Zealand in the final. Then Neeraj Chopra, he became the first Indian to throw a javelin for 90 plus meter, and his throw was 90.23 meter. Correct. Then our country India, we have submitted to host the Commonwealth Games for 2030, and where? And that too at Ahmedabad, Gujarat. Right, we have submitted the bid, it is not finalized yet. Right, moving on students.
Here you can see some other new foundational models such as your Avatar AI, IIT Bombay Consortium, Bharat Gen, Fractal Analytical Limited, Tech Mahindra Makers Lab, then Zentic AITech Innovations, Zensloop Intelligence Private Limited, NeuroDX, Shodha AI. These are some other companies that are working towards and they are developing various models so that India can feature at AI in the global scale. Correct. Also, you will be seeing that AI skills will be imparted now, students. Various fellowship programs will be coming into play. Various internships in the AI sectors will be coming into play because those who will be knowing how to work on AI, they will be getting jobs easily. Next, IIM Udaipur, they have partnered with Ministry of Statistics and Program Implementation, Niti Aayog and Bhashini to enhance India's data monitoring and AI ecosystem. See, what does this Bhashini do is this helps in the multilingual. That means it provides multiple language support, right? So IIM Udaipur, they have partnered with these organizations, right? This will strengthen the India's capability in data monitoring and evaluation and AI ecosystem. Correct? So simple. Last news was also related to AI. This news is also related to AI. Directly remember this. Then apart from this, tell me recently, World Para Athletics Championship. World Para Athletics Championship. Who hosted this or who will host this? Our country, India, will be hosting this. It will be in New Delhi and it will be in the October month. Then National Games of India 2025. Which edition of these national games? These are the 38th edition. Were held across multiple cities in where? In Uttarakhand state. So question can be asked, where was the National Games of India, that is the 38th edition, hosted in Uttarakhand? Moving on. Next, DEPW, that is your Department of Persons with Disability. They have partnered with Ministry of Ayush to launch a 5.26 crore initiative for the persons with disabilities, right? And here remember, this initiative was sanctioned during the 19th governing body meeting of the National Fund for Persons with Disability, and this was during the 19th governing body meeting of the National Fund for the Persons with Disability. So in order to help the persons with disabilities, right, it is their department that has partnered with which ministry? This question will be asked. It is with Ministry of Ayush. And how much amount has been sanctioned here? 5.26 crore rupees has been sanctioned here. Here the focus will be on projects, that is your yoga. Research and development will be focused on yoga and mental and healthy well-being, right, where students will be provided with various hearing impairments also, where their families will be provided with various skills how to handle the persons with or the children with person with or to handle the persons with disability, right? So their parents will also be told about that, right? So here you can see. Next is international affairs, students. Union Minister Piyush Goyal was on a visit to UAE from 18 to 19th of September. What this will do is this will enhance the trade and investment ties between these two countries. Focus will be on education, technology, and various emerging sectors such as your energy sector, right? So take a note of this. Also, there was a 13th India UAE HLJTFI, right? This meeting was held in which Piyush Goyal ji, he co-chaired this 13th edition of this meeting. Correct? Then apart from this, UAE India Business Council, right? This was also held where the focus was on enhancing the trade between these two countries. And here during this particular meeting, India and UAE, they have agreed to achieve $100 billion in trade that will focus in on which sector? On non-oil, precious metal, right? And this will be the target in the next 3 years. Right, students? So here you can see the data. Correct? Here the Union Minister Piyush Goyal visited UAE. Here an Indian businesses delegation including CII, FICCI and ASSOCHAM was accompanied by him. Then he took part in this 13th edition of India UAE meeting, also in UIBC. Then what was the venue of this meeting? It is Abu Dhabi, UAE, and this is the bilateral trade we are targeting. This is the India UAE non-oil trade that we are targeting. We are focusing on the defense sector, marine sector, aerospace, data centers, pharmaceuticals, fisheries, textiles, leather, home sector, and many more.
Moving on, India elected as the member of the Interpol Asian Committee. This is an important question, students, so take a note of this. Direct question will be asked that name that country that has been elected as the member of the Interpol Asian Committee. So it is our India. Next question, when it was elected? So it was during the 25th edition of the Asian Regional Conference, during which India was elected as the member of the Interpol Asian Committee. This election, conducted through a multi-stage voting process, marks a significant enhancement of India's role in international law enforcement cooperation. Focus here will be on organized crime, cybercrime, high human trafficking, terrorism, drug trafficking, and many more. If we talk about Interpol, where is the headquarters of Interpol? It is in Lyon, France. Next is WTO, right? That is your World Trade Organization. They have recently released their report, and it is AI to boost trade by nearly 40% by 2040. Reason is automation, right? Things will be getting automated, because of which we will be seeing that the human error will be reducing. Then we will be seeing that, for example, a human can work in one shift, right? Say for example from 9 in the morning to 5 in the evening. But when we are automating it, when machines are working, there is no gap or there is no shift. They can work 24/7. Hence we can see that the trade will be flourishing, the manufacturing will be enhancing, the service deliveries will be enhancing, right? That is the reason it is said that the software developers, right, they can now, with the help of AI, the software development can become very cost effective, and the cost to develop softwares will be coming down. The cost to develop various other products will be also coming down in the near future, right? So WTO, they have released this report is your marking trend and AI work together to the benefit all. This is an annual World Trade Organization report, and this report stated that because of AI, there will be a boost in the trade nearly 40% by 2040. Take a note of this. Also, AI is projected to generate substantial GDP increase ranging from 12 to 13% across various scenarios. Also, it was found that 90% of the global firms using AI report clearly benefit in the trade related activities, right? Also, another report was released. WTA analysis states that 10%, there has been a rise of 10% in the digital service trade links, right, because of AI. See, AI is game changer, students. It will be disrupting multiple sectors in the coming future, right? We are talking about generative AI, right? Super intelligence, right? Then because of when they will be coming in the market, right? It is just the race who develops them first, and the organization that develops them first will be leading the race, and they will be winning by substantial amount. Reason being, this is the growth curve or the learning curve of an AI, right? Once AI is developed, then the learning curve will also increase very fast. As I mentioned earlier, years of work can be now done just in days, right? So just imagine when a company is developing super intelligence and they have achieved it, RT or general intelligence, they have achieved first. So maybe, and the other companies just behind them, say for example a month. But in that particular 1 month, the amount of research, the amount of work that particular company could have done, right, will be substantial. So that is the reason so much amount of money is being spent on these companies. Their valuations are just going through the roofs. Coming back, students, to banking and finance, PhonePe, they have received the RBI's final approval to operate as a payment aggregator, right? Directly remember, PhonePe received the approval to operate as a payment aggregator. Next, PayRupay partners with BriskPay to expand into cross-border payments. I repeat, PayRupay, that is a software development company that I have partnered with BriskPay, a licensed cross-border payment aggregator, to expand cross-border payment services and offer an integrated global payment platform. Directly remember this, students. Then next is economy and business, OIL, that is Oil India Limited, and HCL. They have recently signed a memorandum of understanding for critical and strategic minerals. See, what are these critical minerals? These are the minerals, they are quite important for the economic development of our nations, right? These minerals, they are used in almost every sector now, be it your pharmaceutical sector, be it your electric vehicle, their batteries, right, be it in the semiconductor chips. So we are seeing that these
critical minerals, these are used everywhere, these critical and strategic minerals, right, such as your copper and associated other minerals. So their demand is increasing, and if their demand is increased, we need to have focus on that. If you remember a few months back, rare earth metals is being controlled by China, and they had a pause on the export of those minerals, rare export minerals, to globally, specifically India also. So indirectly or directly, we can say that we have dependence on these rare earth materials to China. So we don't want that. We do not want to be dependent on any country. So we need to in-house start the exploration of these critical minerals, of these rare earth materials, so that we do not have to be dependent on any other country. And if any in that particular country any policy changes, it might affect us also, right? Say for example, what is happening right now in USA, right, that H1B visa holders, they are getting impacted, right? It is stated that following from 21st of September, all the people who will be registering for the H1B visa and through the lottery system who will be allotted the H1B visa, they have to pay $1 lakh, right, as the fees for that, right, which is a very huge amount. It will be negatively impacted. This fees won't be paid by the individual, but it will be paid by the company who is sponsoring that individual. So why an individual company will be sponsoring individuals from various other countries, right, for such a high amount? So these things basically is how we do not want to be dependent on any other country. Next is IGF and QETCI. IGF is your India Global Forum, and QETCI is your Quantum Ecosystems Technology Council of India. They have together recently signed a memorandum of understanding, and this MOU is basically for what? To develop UK-India quantum value chain map. I repeat, why this MOU has been signed? It has been signed to develop UK-India quantum value chain map. This is a major step in bilateral cooperation in the quantum technologies. What is quantum? Quantum is when you go at a very small scales, right? Very small scale when you are looking, right? With this, we are seeing that the quantum field has been developed. Quantum communication is coming into play. Quantum entanglement, because of which Nobel Prize was granted to the scientist who discovered the quantum entanglement, right? And quantum is the future, students, right? So qubits are coming into play. Let's not go into deep down, but you need to understand, because of quantum computers and because of the quantum technology, the computation power will be increasing significantly, and quantum computers and the quantum technology, when incorporated with AI, it will be a game changer. Correct? Next is Hindi drama Homebound, nominated for Oscar Awards 2026. This Homebound is directed by Neeraj Gyavan and produced by Karan Johar, was selected as India's official entry in the category Best International Feature Film for 98th Oscar Award. Next is ACC has approved new Director Generals for CISF and ITBP. If we see, first appointment is Parveen Kumar as the Director General of ITBP. His tenure will be from 30th of September to 30th of September 2030. Then second appointment is Praveer Ranjan, IPS officer, has been appointed as the Director General of CISF, and his tenure will be from 30th of September 2025 to 31st of July 2029. And here Parveen Kumar will be succeeding whom? He will be succeeding Rahul Rashgotra, and Praveer Ranjan will be succeeding Rajvinder Singh Bhatti. So remember these two appointments. Next is related to sports, students. AAI. What is this AAI? It is your Archery Association of India. They have launched India's first ever archery league, and Ramcharan has been appointed as their brand ambassador. Ramcharan is a very famous Indian actor and a filmmaker, and he has been appointed here as the brand ambassador for the same. Correct? So we are talking about Archery Association of India. What they have launched? They have the first ever archery league. Correct? And for this archery league, who has been appointed as the brand ambassador? Ram Charanji. Correct? Next. And when it is scheduled to be held, it is from 2nd to 12th of October at the Yamuna Sports Complex in New Delhi. Then next is World Water Monitoring Day, observed on 18th of September. This day is observed basically to raise awareness about water quality issues and encourage public participation in safeguarding the water resources. This was first observed in 2003 on 18th of October. Correct? Take a note of this. Also, one more thing, remember, in 2007, right, I just mentioned that in 2003 we observed this on 18th of October, right? But in 2007, this 18th of October was later changed to 18th of September in 2007.
7. So when do we observe this World Water Monitoring Day? Now on 18th of September. Next is World Cleanup Day, observed on 20th of September. It is observed basically to raise awareness and promote the cleanup activities and their role in sustainable development that makes our area clean. And this year it is the second observance of this day. Right? Next is state news. Indian Railways renamed Ahmednagar railway station as Ahilyanagar in Maharashtra. Important news. So Indian Railways renamed Ahmednagar railway station to what? To Ahilyanagar metro station, and it is in Maharashtra. So that's all for the day, students. Now it's time for the revision part that will be quite beneficial for you all. Name that INS, that is Indian Naval Ship, built by Garden Ridge Shipbuilders and Engineers Limited, and it was received by Indian Navy in Kolkata, West Bengal, where the headquarters of this GRSE is. So question asked is, name that Indian Naval Ship. What is the name of that Indian Naval Ship that was recently received here? This is important. It is INS Himgiri. INS Himgiri. Next, in July, which country launched an advanced Earth observation satellite using KZ-1A carrier rocket from Sichuan province of China? So this Earth observation satellite was of Pakistan, that was launched by China. Very important. Next is in August, SpaceX, they have successfully launched the 11th operational astronaut mission for NASA to the International Space Station aboard or using the Crew Dragon Endeavour spacecraft using Falcon 9 rocket to launch it. Which among the following was not a part of the astronaut crew here? Among the following, if we see, Thomas Pesquet was not a part of the crew here. Rest or four were the part of the crew. Next, here you can see Zena Cardman of NASA, Mike Finke of NASA, Kimya Yui of JAXA from Japan, and Oleg Plentov from Roscosmos of Russia. Next, identify the company that announced the launch of their first commercial satellite mission using Leap 1 using Falcon 9 rocket in the third quarter of 2025. So this Leap 1 we have discussed multiple times. It is of Dhruva Aerospace, right? And this is their first commercial satellite mission, Leap 1, that is launching expeditions for aspiring payloads 1. It was launched using the Falcon 9 rocket of SpaceX. And this mission, it will host two Australian payloads, that is your Nexus 1 and OTR 2. Next, in August, where did ISRO inaugurated the Himalayan Outpost for Planetary Exploration, that is HOPE analog mission that is designed to stimulate the Mars-like conditions. It is Ladakh, right? So where did ISRO inaugurated this Himalayan Outpost for Planetary Exploration, that is HOPE analog mission that will stimulate the similar condition that of Mars, that will be beneficial for doing research and development and testing for future missions to Mars. It is Ladakh. Next, which company built the semi-automatic minefield marker named Mechanical Minefield Marking Equipment Mark II, formally inducted by Indian Army in August? It is your BEML Limited, that is Bharat Earth Movers Limited. Next, in August, which company successfully conducted the first static test of Kalam 1200 solid rocket motor, the first stage of the Vikram 1 launch vehicle in Sriharikota, Andhra Pradesh? It is Skyroot Aerospace Private Limited. Right, this tech marks the significant step in the development of Vikram 1 that is built by Skyroot Aerospace. Next is consortium led by which of the following has been selected by InSpace to design, build and operate India's first fully indigenous commercial Earth observation satellite constellation under public-private model. See, what is this constellation? When there is a satellite moving around the Earth in the low Earth orbit in a particular format or in a particular design, right? So this is the constellation. So it is Pixel Space India, right? This consortium led by led by which of the following that has been selected by InSpace? It is Pixel Space India. And similar type of constellation is also being built by Starlink that will be providing internet connection. And this consortium of or this constellation, it is for Earth observation satellites, right? This constellation by Pixel Space India. Then next is name the weather and climate monitoring satellite which has been launched by Ariane 6 rocket in August 2025. So which is that weather and climate monitoring satellite? It is METOP SGA-1. Next, mention the company that signed a memorandum of understanding with InSpace to collaborate on the development of reusable rocket engine technology. So which is that company we are talking about? It is Astrofel Aerospace. This is the company that we are talking about.
Next is name that country or identify that country that launched the fourth orbital plane satellites of the Geely Future Mobility Constellation or Geely 04 constellation of 11 low Earth orbit satellites using Smart Dragon 3 rocket to enhance the global IoT connectivity. So identify that country. It is China. Very important, students. And with this launch, the G Space expanded their Geely 04 GSATCOM IoT constellation from 31 satellites to 41 satellites. Next, mention the Indian naval ship, or you have to name that Indian naval ship that was commissioned on 14th of August as the third in series of 4 survey vessel large ships by GRSE Limited. It is your INS Ikshak. This is the name of that third Indian naval ship. Next, in which state was the state-of-the-art space laboratory named Pasang Wangchuk Sona ISRO Space Laboratory inaugurated in August 2025? It is Arunachal Pradesh. Take a note of this. Next, from where did India successfully test fire the indigenously developed intermediate range blasting missile Agni 5 in August 2025? From where did India successfully test fire it? It was tested from Odisha, ITR Chandipur, Odisha. Then next, name the advanced AI system introduced by NASA in August that will help to understand and forecast the space weather. It is Surya. Very important, students, right? This Surya, it is a groundbreaking open source AI foundation model based on Helio AI that was developed by Impact under the NASA. Impact is your implementation and advanced concept or integracy implementation and advanced concepts team, right? In this Impact team, it is of NASA. Next, mention the name of the country that launched the advanced Jupiter space camera abroad NAOS, that is National Advanced Optical System satellite in August 2025. So mention the name of that country. It is Israel, right? And it was launched using Falcon 9 rocket. Next is identify the correct statement regarding Pixel Space India and Dhruv. Next is homework questions, students. First, see, yesterday I gave you such an interesting way of collaborating in the comment section, but hardly any students commented below. I think I have to only give you homework question on daily basis so that you are able to attempt that and benefit from it. So let's move on to it. The first question that I'm asking you, name the chip that was recently launched by Google, right? It is a very important chip with the computation of which will be enhancing. Second question, name the AI companies recently, right, which are game changer. Give me one important company from China, from USA, and even from India. Third question, recently 2 Indian naval ships, they were commissioned into the Indian Navy. One was developed by Garden Ridge Shipbuilders and Engineers Limited. Another was built by Hindustan Aeronautics Limited. So name those 2 Indian naval ships. Fourth question, who recently won the US Open? Both male and female, so, or male singles and female singles. Give me both, right? Men singles and female women singles. Then fifth question, tell me recently, if I ask you who has been appointed as the chairperson of SEBI, who he succeeded, right? So these are your important homework questions, students. Now I want maximum participation from all the students. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे. तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 21 एंड 22 सितंबर की. ये सेशन काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आप सभी के लिए, तो एंड तक बने रहिएगा. काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा. आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने, या फिर हम बोले डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटी, इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ यहाँ पार्टनरशिप की. देन पीयूष गोयल जी यूएई के विजिट पे थे, उसको डिस्कस करेंगे. देन इंडिया को इलेक्ट किया गया है मेंबर ऑफ इंटरपोल एशियन कमेटी का, उसको डिस्कस करेंगे. एंड डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई जो बताती है कि ट्रेड में हमें ऑलमोस्ट 40% का जंप देखने को मिलेगा बाय 2040. रीजन क्या रहेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो इन सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, एंड तक बने रहिएगा. वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड. माय नेम इज विकास राणा. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below.
चलिए स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर से। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी, इन्होंने अनवेल किया एक लोगो एंड अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव फॉर इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 के लिए। देखो सबसे पहली चीज क्या है, एआई का इंपैक्ट समझो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चीजें अब ऑटोमेटेड होने लगेंगी, राइट। ऑटोमेशन के ऊपर हम जाते हुए दिखेंगे एंड इस ऑटोमेशन से काफी ज्यादा जॉब्स की लॉस हमें होता हुआ दिखेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो ये सॉफ्टवेयर आएंगे जहां पे ऑटोमेशन होगी, जिन चीजों से चीजें चलेंगी, तो उन सॉफ्टवेयर को, उन प्लेटफॉर्म्स को रन करने के लिए लोगों की जरूरत होगी, हेंस वहां पे हमें जॉब्स डेवलप होती हुई दिखेंगी। पहली चीज ये समझेंगे। तो अभी रिसेंटली अश्विनी वैष्णव जी, ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इन्होंने लोगो एंड फ्लैगशिप इनिशिएटिव अनवेल किया इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 का ड्यूरिंग द 4th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल एआई सिंपोजियम। ये कब होगा आपका समिट? ये समिट फरवरी 19-20 फरवरी को होगा। कहां पर? भारत मंडपम में ये हमें देखने को मिलेगा। ऑफिशियल लोगो जो यहाँ पे अशोका चक्र रहेगा इस पे, एंड यहीं पे कुछ इनिशिएटिव्स जैसे कहे जा रहे हैं लॉन्च किए। जैसे इनिशिएटिव्स में क्या जाते हैं? एआई पिच फेस्ट, ग्लोबल इनोवेशन चैलेंजर्स फॉर यूथ, वीमेन एंड अदर पार्टिसिपेंट्स, रिसर्च सिंपोजियम, एआई एक्सपो, ये सारी चीजें लॉन्च की गई। जैसे एआई पिच देख सकते हैं, ग्लोबल इनोवेशन चैलेंज फॉर यूथ, वीमेन एंड अदर पार्टिसिपेंट्स, रिसर्च सिंपोजियम जहां पे रिसर्च होती है दिखेगी। एक और चीज बताता हूं, एआई के आने से स्टूडेंट्स 1 साल का जो रिसर्च वर्क है ना, अब 1 से 2 दिन में हो जाएगा। एंड इसीलिए आप देख रहे हैं बड़ी कंपनीज जो हैं वो जनरेटिव जनरल इंटेलिजेंस के ऊपर सुपर इंटेलिजेंस को बनाने की कोशिश कर रही है, एंड इसीलिए इतना ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है। रीजन बीइंग कि जो भी कंपनी पहले ये एआई बना लेगी, जनरेटिव एआई बना लेगी या फिर सुपर इंटेलिजेंस एआई बना लेंगे, उससे क्या होगा कि जो रिसर्च, जैसे मैंने बताया, ये जो रिसर्च वर्क है ना और जल्दी होने लगेगा। तो मान लो जिस कंपनी ने बना लिया वो ईयर्स अहेड हो जाएगी, डेकेड्स अहेड हो जाएगी, जनरेशन अहेड हो जाएगी बाकी कंपनियों के, एंड इसीलिए इतना पैसा खर्च किया जा रहा है इस एआई की रेस में, राइट। तो यहीं पे एआई एक्सपो हमें देखने को मिला। फिर इसी के अलावा कई सारे फाउंडेशनल मॉडल्स यहां पे आते हुए दिख रहे हैं जो कि इंडिया में काफी बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे, जैसे अवतार एआई, आईआईटी बॉम्बे कंसोर्टियम, भारत जैन, देन फ्रैक्टल एनालिटिक्स लिमिटेड के द्वारा आया है इंडिया का पहला लार्ज रीजनिंग मॉडल। टेक महिंद्रा मेकर्स लैब अपना यहां पे एआई प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहा है ओरियन गवर्नमेंट एप्लीकेशंस के लिए। तो बहुत सारे अलग सॉफ्टवेयर्स यहां पर हमें देखने को मिल रहे हैं जहां पे इंडिया में ही एआई के ऊपर काम किया जा रहा है। मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं आईआईएम उदयपुर। इन्होंने पार्टनर किया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, नीति आयोग एंड भाषिनी के साथ, ताकि इंडिया का डाटा मॉनिटरिंग एंड एआई इकोसिस्टम के ऊपर काम किया जा सके। सेम चीज यहां पे भी हम एआई की बात कर रहे थे और अब फिर देख रहे हैं हम एआई की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। भाषिनी का काम क्या है? सबसे पहले ये समझो, भाषिनी आपका मल्टीलिंगुअल या फिर मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट प्रोवाइड कराती है किसी भी सॉफ्टवेयर में, राइट। क्योंकि इंडिया में इतनी सारी भाषाएं हैं, उन सब का सपोर्ट, क्योंकि एक लैंग्वेज बैरियर नहीं होनी चाहिए कम्युनिकेशन में। तो आईआईएम उदयपुर, इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, नीति आयोग एंड भाषिनी के साथ यहाँ पे पार्टनर किया ताकि इंडिया में हम डाटा को स्टोर कर सकें। वो डाटा बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। जो एआई इतना बड़ा बनता जा रहा है, इतनी लर्निंग हो रही है, उसका सबसे बड़ा फीडर क्या है? वो है डाटा, राइट। जैसे हम कहते हैं ना, इंसान को खाना चाहिए, पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो सिमिलरली एआई सबसे बड़ी जो चीज है एआई को रन करने के लिए वो होता है डाटा। डाटा बहुत जरूरी है उसको ट्रेन करने के लिए, ठीक है। सो एआई इकोसिस्टम, डाटा मॉनिटरिंग के ऊपर ध्यान देने के लिए ये पार्टनरशिप हमें होती हुई दिखी। फिर इसी के अलावा नीरज चोपड़ा वो पहले इंडियन बन गए जिन्होंने जेवलिन थ्रो में 90 मीटर का मार्क क्रॉस किया, एंड इनका जो भी थ्रो था वो था 90.23 मीटर का, दोहा डायमंड लीग में, ठीक है। फिर इसी के अलावा पूछा जाए कौन होस्ट कर रहा है? वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप न्यू दिल्ली में होगी, एंड हमारा इंडिया इसको होस्ट कर रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट। फिर इसी के अलावा अगर देखें, अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप बुल्गारिया में हुई, एंड इंडिया ने कौन सी पोजीशन पे सिक्योर किया? इंडिया ने 4th पोजीशन सिक्योर किया यहाँ पर, 2 गोल्ड, 4 सिल्वर एंड 3 ब्रॉन्ज के साथ, तो टोटल 9 मेडल्स के साथ यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, फिर डिपार्टमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी, इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ पार्टनर किया एंड लॉन्च किया 5.26 करोड़ रुपए का इनिशिएटिव फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटीज, राइट। उनको स्किल्स प्रोवाइड कराए जा सकें, राइट। जो नेसेसरी टूल्स हैं उनकी लाइफ को इजी बनाने के लिए वो प्रोवाइड कराए जा सकें। जैसे फॉर एग्जांपल जिन लोगों को सुनाई नहीं देता, राइट, उनको हियरिंग एड प्रोवाइड कराने के लिए, जो लोग देख नहीं सकते, विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनके लिए यहाँ पे ब्रेल स्क्रिप्ट में कंटेंट को प्रोवाइड कराने के लिए, बुक्स को प्रोवाइड कराने के लिए, राइट। फिर इसी के अलावा जो पेरेंट्स हैं उनको यहाँ पे स्किलिंग कराने के लिए कि कैसे उनको अपने बच्चों के साथ, राइट, हैंडल करना है, उन्हें उनको कैसे टैकल करना है, राइट। तो उन सबको उन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए यहाँ पे ये पैसा लगेगा, एंड ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी है जिन्होंने आयुष मिनिस्ट्री के साथ मिलकर ये इनिशिएटिव लिया है, और ये पैसा खर्चा किया जाएगा ताकि जो पर्संस विद डिसेबिलिटी हैं उनकी लाइफ को ईजी बनाया जा सके।
मूविंग ऑन स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल अफेयर्स पर आते हैं। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी अभी विजिट पे थे टू यूएई 18 से 19 सितंबर तक, एंड यहाँ पे इन्होंने ट्रेड को बढ़ाने की बात की बिटवीन दीज टू नेशंस, जहाँ पे हम एजुकेशन के ऊपर बात करेंगे, टेक्नोलॉजी के ऊपर बात की गई, एंड इमर्जिंग सेक्टर्स जैसे एनर्जी सेक्टर उसके ऊपर यहाँ पे बात की गई। फिर इन्होंने इंडिया 13th एडिशन ऑफ इंडिया यूएई HLJTFI मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। इवन UIBC जो कि है यूएई इंडिया बिजनेस काउंसिल मीटिंग में इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, जहाँ पे इन्होंने इन दोनों कंट्रीज के बीच में डिसाइड किया गया कि आने वाले 3 सालों में हम $100 बिलियन का बायलेटरल ट्रेड करेंगे, जहाँ पे फोकस रहेगा कि नॉन ऑयल प्रोडक्ट से हम इतना ट्रेड दो कंट्रीज के बीच में कर सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट है, इंडिया ने इलेक्ट किया या फिर इंडिया को इलेक्ट किया गया एज अ मेंबर ऑफ इंटरपोल एशियन कमेटी 25वें एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस के दौरान। तो दो क्वेश्चन बनते हैं, किस कंट्री को भी इलेक्ट किया गया एज अ मेंबर ऑफ इंटरपोल एशियन कमेटी? इंडिया। और कब इलेक्ट किया गया? 25वें एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस के दौरान इनको यहाँ पे इलेक्ट किया गया। राइट, अब इससे क्या होगा, इंडिया का जो इंटरनेशनल लॉ एनफोर्समेंट कॉर्पोरेशन है उसमें पार्टिसिपेट कर सकेगी इंडिया। एंड यहाँ पे जो एक चैलेंजेस हमें और क्राइम्स होते हैं, साइबर क्राइम्स होते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, टेररिज्म होती है, ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, उसमें इंडिया पार्टिसिपेट कर सकेगी इन डिसीजन मेकिंग, एज वेल एज वहाँ पे इंडिया को बेनिफिट भी मिलता हुआ दिखेगा कि इंडिया के ऊपर भी यहाँ पे जो इतने क्राइम्स होते हैं, साइबर अटैक्स होते हैं, वहाँ पे उनको काफी बेनिफिट मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज की गई जो बताती है कि एआई के बदौलत जो ट्रेड है वर्ल्ड का वो 40% से बढ़ जाएगा बाय 2040। रीजन क्या है? जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन आने से मान लो फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे एक एम्प्लॉय 10 बजे से लेके 5 बजे तक काम कर पाता है सिर्फ, लेकिन एआई के आने से सेम सॉफ्टवेयर या फिर सेम रोबोट आपका 24/7 जॉब कर पाएगा, वो काम कर पाएगा, जिससे ऑटोमेशन बढ़ती हुई दिखेगी। जो एरर्स हैं वो यहाँ पर हमारे कम होते हुए दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि जॉब्स बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगी, इन रोबोट्स को रन करने के लिए, इनको मेंटेन करने के लिए जॉब्स स्टिल मार्केट में रहेंगी। एंड इन जो सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं, अगर हम सर्विस इंडस्ट्री की बात करें, तो उनको रन करने के लिए भी यहाँ पे जॉब्स हमें देखने को मिलती रहेंगी। राइट, बट इससे काफी ज्यादा डिस्ट्रप्शन आएगा, ट्रेड भी फ्लरिश होता हुआ दिखेगा। जो लोग यहाँ पे ऑटोमेशन के ऊपर काम करेंगे दे विल बी मेकिंग अ लॉट टन ऑफ मनी। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको अभी बता देता हूँ, जीडीपी भी यहाँ पे इंपैक्ट होती हुई दिखेगी, जीडीपी बढ़ती हुई दिखेगी, एंड काफी ज्यादा ग्रोथ यहाँ पर आती हुई हमें दिखेगी। अगर मैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो यहाँ पे डायरेक्टर जनरल कौन रहेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की? नकोजी अकोंजो इएवला। हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, एंड 1995 में एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, फिर इसी के अलावा अगर आपसे पूछा जाए जरा बताओ, अभी रिसेंटली फर्स्ट एडिशन ऑफ खो खो वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ था, एंड इंडिया ने बोथ मेंस एंड वीमेंस टाइटल यहाँ पे जीते गए। ठीक है, फिर खेलो इंडिया बीच गेम्स, खेलो इंडिया बीच गेम्स ये कहां पर हुए? इनका इनॉग्रेल एडिशन था, मतलब फर्स्ट एडिशन था, तो दीव में हमें देखने को मिले, एंड मणिपुर ने यहां पे मेडल टैली में टॉप किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस पे। फोन पे ने रिसीव किया आरबीआई का फाइनल अप्रूवल टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। डायरेक्ट क्वेश्चन, यहीं पे अगर मैं पूछूं दुरंत कप की, दुरंत कप किस स्पोर्ट से रिलेटेड होता है? तो फुटबॉल से रिलेटेड होता है। राइट, एंड दुरंत कप अभी 2025 का किन्होंने जीता? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के द्वारा यहाँ पे दुरंत कप को जीता गया। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं फिर स्टूडेंट्स पे रुपे। इन्होंने ब्रिस्क पे के साथ यहाँ पे पार्टनर किया टू एक्सपेंड इनटू क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। डायरेक्टली इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इकोनॉमी एंड बिजनेस पर आते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड एंड एचसीएल के द्वारा एमओयू साइन किया गया था कि क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के ऊपर काम किया जा सके। स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो कुछ टाइम पहले रेयर अर्थ मटेरियल्स पे बैन लगा दिया था चाइना के द्वारा, क्योंकि चाइना मोनोपोली के पास मोनोपोली है रेयर अर्थ मेटल्स की। इससे क्या दिखा दिए, क्या दर्शाता है कि हम डिपेंडेंट हैं उस कंट्री पे। सिमिलरली अभी H1B वीजास पर जो फीस लगी है, राइट, ये क्या दर्शाती है कि अभी हम डिपेंडेंट हैं दूसरी कंट्रीज पे। तो ये डिपेंडेंस को रोकने के लिए, एंड दैट टू क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स, जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि आज के टाइम पे हर सेक्टर में इसको यूज किया जाता है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो बैटरी हैं उसमें हो, तो हर जगह इनका यूज होता है। एंड इसीलिए इंडिया खुद इनको बनाना चाहता है, इंडिया खुद इनकी जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट करना चाहता है, इन हाउस बनाना चाहता है, ताकि हमें दूसरी कंट्रीज पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े।
मूविंग ऑन, IGF इंडिया ग्लोबल फोरम एंड QETCI जो कि है क्वांटम इकोसिस्टम्स टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया, इनके द्वारा MOU साइन किया गया ताकि यूके इंडिया क्वांटम वैल्यू चेन मैप के ऊपर काम किया जा सके, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है बायलैटरल कोलैबोरेशन में। देखो क्वांटम होता है जब आप बहुत छोटे स्केल पे जाते हैं, एंड आज के टाइम पे क्वांटम टेक्नोलॉजीज बहुत ज्यादा ग्रो करती हुई दिख रही हैं, जिससे हम देख रहे हैं जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, एंड इससे बहुत ज्यादा तेज हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कंप्यूटर्स के थ्रू। पहले नॉर्मल कंप्यूटर आए, फिर सुपर कंप्यूटर्स आए, अब क्वांटम कंप्यूटर्स का जमाना है स्टूडेंट, एंड AI और क्वांटम कंप्यूटर जब एक साथ आ जाएंगे तो बहुत गेम चेंजर होगा। जैसे हम देखते हैं नॉर्मल बिट्स होते हैं 0 या 1, क्वांटम कंप्यूटर्स में होते हैं क्यूबिट्स, राइट, जिससे जो कंप्यूटेशन है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती हुई दिखती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हिंदी ड्रामा होम बाउंड। इनको नॉमिनेटेड होम बाउंड मूवी को नॉमिनेट किया गया ऑस्कर अवार्ड के लिए। इस फिल्म को किसके द्वारा डायरेक्ट किया गया है? नीरज ग्यावन के द्वारा डायरेक्ट किया गया है, एंड इवन यहाँ पे आप देखेंगे करण जौहर जी के द्वारा इसको प्रोड्यूस किया गया है, एंड ये अभी रिसेंटली इंडिया से सिलेक्ट की गई एज द ऑफिशियल एंट्री इन द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म फॉर द 98th ऑस्कर अवार्ड। नेक्स्ट फिर आ जाते हैं, ACC ने अप्रूव किया न्यू डायरेक्टर जनरल्स फॉर CISF एंड ITBP। देखो अगर सबसे पहले अपॉइंटमेंट देखें, प्रवीण कुमार, इनको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ ITBP। सितंबर 30 2025 से सितंबर 30 2030 तक रहेंगे ये, एंड ये किनको सक्सीड करेंगे? ये सक्सीड करेंगे राहुल रसगोत्रा जी को। वहीं पे दूसरी अपॉइंटमेंट आ जाती है प्रवीर रंजन जी की, ये डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं CISF के, एंड 30 सितंबर 2025 से 31 जुलाई 2029 तक यहाँ पोजीशन में रहेंगे, एंड ये किनको सक्सीड करेंगे? राजविंदर सिंह भट्टी जी को ये सक्सीड करेंगे। मूविंग ऑन, स्पोर्ट्स पर आते हैं। फिर आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये लॉन्च कर रहे हैं इंडिया का पहला आर्चरी लीग को, जहां पे रामचरण जी को अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर। ये रामचरण कौन है? ये काफी बड़े फिल्म मेकर हैं एंड एक्टर हैं, इनको यहाँ पे इस लीग का एज अ ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है, एंड ये पहला एडिशन रहेगा फर्स्ट एवर आर्चरी लीग का। 2 से 12 अक्टूबर तक होगा यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, न्यू दिल्ली में हमें देखने को मिलेगा। मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पे। वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे 18 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। पहले ये 18 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता था, लेकिन 2007 में रीनेमिंग की गई, एंड पहली बार इसको 18 अक्टूबर 2003 में ये डे ऑब्जर्व किया गया था, ताकि वाटर को हम तरीके से यूज कर सकें, वाटर को वेस्ट ना कर सके, एंड इसकी इंपॉर्टेंस क्रिएट करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। फिर आ जाते हैं वर्ल्ड क्लीन अप डे, 20 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। वो अर्थ को क्लीन करने के लिए, पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए, एंड हर जगह जो कूड़ा पड़ रहता है उसको यहाँ पे क्लीन कर सकें, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। इस डे का स्पेशल फोकस था टेक्सटाइल एंड फैशन वेस्ट, राइट। इन दोनों के कूड़े को साफ करने के लिए, वेस्ट को साफ करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, एंड इस बार हमने इसका सेकेंड ऑब्जर्वेंस किया। मूविंग ऑन, स्टेट न्यूज पर आते हैं स्टूडेंट। देन इंडियन रेलवेज ने रीनेम कर दिया अहमदनगर रेलवे स्टेशन को, जो कि पुणे डिवीजन में है इन महाराष्ट्र, टू अहिल्यानगर। डायरेक्ट नेम चेंज है, लेकिन नेम चेंज आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पता होना चाहिए। ऐसे पूछ लेंगे कि अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन कहां पर है? महाराष्ट्र में है। अहिल्यानगर नया नेम है किस रेलवे स्टेशन का? तो अहमदनगर रेलवे स्टेशन का। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर, जिससे आपकी लर्निंग और स्ट्रांग होगी। What name was officially given to the टाइगर कॉरिडोर एरिया जो कनेक्ट कर रहा है कवाल टाइगर रिजर्व को तेलंगाना में विद तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व इन महाराष्ट्र? तो क्या नाम दिया गया था उसको? वो है कुमराम भीम कंजर्वेशन रिजर्व। एंड करंटली अगर हम देखें 58 टाइगर रिजर्व्स हमें देखने को मिलते हैं इंडिया में, एंड माधव नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, ये ही आपका 58 टाइगर रिजर्व है, जो कि रिसेंटली डिक्लेयर किया गया था मार्च 2025 में। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने लॉन्च किया बैटरी आधार इनिशिएटिव ड्यूरिंग द बैटरी समिट 2025 जो कि दिल्ली में हुई, जिसका एम रहेगा टू एनहांस ट्रेसेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी इन इंडियाज बैटरी इकोसिस्टम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बैटरी आधार इनिशिएटिव को लॉन्च किया? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड यहीं पे अगर हम देखें, ये जो बैटरी आधार टेक्नोलॉजी है इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया था? टाटा एलेक्सी लिमिटेड, इनके द्वारा करा गया था, राइट। एंड जो ये यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी होगी जो कि बैटरी आधार है, इसका 16 डिजिट का ये एक डिजिटल आइडेंटिटी रहेगी। जैसे आधार कार्ड हमारा, राइट, 12 डिजिट का आधार कार्ड होता है, यूनिक आइडेंटिटी होती है। सिमिलरली यहाँ पर हम देखेंगे ये आपकी 16 डिजिट की आइडेंटिटी होगी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन इंडिया दैट बिकेम द 24th टू अचीव 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ देयर रेल ट्रैक्स एज अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन मई 2025। तो ये है गुजरात स्टेट, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव की गई है इनके द्वारा।
फिर आ जाते हैं, मेंशन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट वाज डिक्लेयर्ड एज इको सेंसिटिव जोन इन मे बाय मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज टू प्रोटेक्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड हंगूल डियर। तो हंगूल डियर को प्रिजर्व करने के लिए तराल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको डिक्लेयर किया गया एज इको सेंसिटिव जोन। ये तराल सेंचुरी है कहाँ पर? ये है पहलगांव में। पहलगांव ये कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट, वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने इनॉग्रेट किया तीसरा एडिशन ऑफ लेवेंडर फेस्टिवल। लेवेंडर फेस्टिवल, लेवेंडर बेसिकली फ्लावरिंग स्पीशीज होती है, राइट, काफ़ी अच्छे फ्लावर्स होते हैं, तो ये लेवेंडर फेस्टिवल ऑब्जर्व किया जाता है कहाँ पर? ये पूछा गया है, तो जम्मू एंड कश्मीर में इसको ऑब्जर्व किया गया। एंड इससे टूरिज्म यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखेगा, इससे लेवेंडर के जो फ्लावर्स हैं इसको इकट्ठा कर कर यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि ये एक अरोमेटिक क्रॉप है, तो इससे कई सारे लोकल स्टार्टअप्स यहाँ पर ग्रो हो सकते हैं, इस प्रोडक्ट को यूज करके वेरियस अदर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो कि मार्केट में वो सेल कर सकेंगे। नेक्स्ट, ओडिशा गवर्नमेंट, इन्होंने लॉन्च किया कौन सा इनिशिएटिव फॉर फॉस्टरिंग इंक्लूसिव सस्टेनेबल एंड इनोवेटिव अर्बन ग्रोथ भुवनेश्वर ओडिशा में। तो नाम क्या रहेगा उस इनिशिएटिव का? वो है अंकुर। अंकुर क्या है आपका? अंकुर है आपका अटल नेटवर्क ऑफ नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म। ये एक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है जो कि आपकी सस्टेनेबल एंड इनोवेटिव अर्बन ग्रोथ को प्रमोट करेगा। कहाँ पर? भुवनेश्वर ओडिशा में। नेक्स्ट आते हैं फिर, उस इवेंट का नाम बताओ जो कि इनॉग्रेट किया गया डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के द्वारा 3 जून को एट इंडिया हैबिटेट सेंटर इन दिल्ली, जिसमें इंक्लूडेड था लॉन्च ऑफ लैंडमार्क बुक्स ऑन साइकिलिंग। तो इवेंट का नाम है अर्बन अड्डा 2025 कॉन्क्लेव। यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ध्यान दिया गया है, यहाँ पे बात की गई है जेंडर एंड मोबिलिटी के ऊपर, क्लाइमेट रेजिलेंट सिटीज़ बनाने की बात की गई है, एंड हम कैसे वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं, क्लीन एयर प्रमोट कर सकते हैं, वाटर को प्रॉपरली सस्टेनेबली एंड अच्छे तरीके से हम लोगों तक पहुँचा सके हैं, एंड इंक्लूसिव ट्रांसपोर्ट के ऊपर यहाँ पे बात की गई, राइट। तो ये है वो इनिशिएटिव अर्बन अड्डा 2025 कॉन्क्लेव जो यहाँ पे लॉन्च किया गया। फिर आ जाते हैं, किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किया? राजीव गांधी वन संवर्धन योजना को, पहली चीज। दूसरी है ग्रीन अडॉप्शन स्कीम, तो ये दोनों लॉन्च किए गए जिसका एम है टू एनहेंस ग्रीन कवर एंड प्रमोट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन द स्टेट। तो क्या नाम रहेगा उस स्टेट गवर्नमेंट का? वो है हिमाचल प्रदेश। इनके द्वारा राजीव गांधी वन संवर्धन योजना एंड ग्रीन अडॉप्शन स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया गया। द एम यहाँ पे सिंपल सा क्या है कि जो ग्रीन कवर है, हरियाली है, उसको बढ़ाने की यहाँ पे बात की गई, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की बात की गई, राइट। एंड जो बंजर जगह पैच ऑफ लैंड हो जाता है छोटा, वहाँ पर हम ग्रीनरी कर सकें, करेक्ट, जिससे एक अच्छा ब्यूटिफिकेशन भी होगा एज वेल एज एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच टू वेटलैंड्स इन राजस्थान वर न्यूली डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट्स एज अनाउंस्ड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव। तो वो दो कौन से वेटलैंड हैं? वो हैं खिचियान एंड मैनार। एक चीज याद रखेंगे, मैनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, इसको बर्ड विलेज के नाम से भी जाना जाता है, राइट। ये बर्ड में यहाँ पे काफी ज्यादा स्पीशीज हमें देखने को मिलती है। एंड जो खिचियान वेटलैंड है ये लोकेटेड है नॉर्दर्न थार डेजर्ट में, करेक्ट। इन दोनों राजस्थान में है। राजस्थान में 4 रामसर साइट्स हैं। अब नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑब्जर्व स्वच्छता पखवाड़ा फ्रॉम 1st of May to 15th of May इन दिल्ली। एंड स्वच्छता पखवाड़ा इसको कंडक्ट किया गया अंडर विच मिशन? तो ये आपका स्वच्छ भारत मिशन के अंडर कंडक्ट कराया गया था स्वच्छता पखवाड़ा। एंड स्वच्छता पखवाड़ा को इनिशियली अप्रैल 2016 में लॉन्च किया गया था, राइट, जहाँ पे डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ये साथ आती हैं एंड 2 वीक डेडिकेट करती हैं ताकि इंटेंसिव मतलब जोरों शोरों से यहाँ पे क्लीनिनेस के ऊपर काम किया जा सके, सफाई के ऊपर काम किया जा सके। नेक्स्ट, किस स्टेट में इंडिया ने अचीव की 100% सक्सेस रेट इन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट अंडर उल्लास नव भारत सशक्त कार्यक्रम इन जून 2025? तो किस स्टेट ने अचीव किया? ये है तमिलनाडु, राइट। नेक्स्ट, नेम द एप्लीकेशन एनहांस्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन 4th of June टू प्रोवाइड रियल टाइम वोटर टर्नआउट अपडेट्स। तो यह है इलेक्शन कमीशन नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये लॉन्च अलाइन करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कमिटमेंट ताकि टाइमली पब्लिक कम्युनिकेशन हो सके, जो कि हाईएस्ट प्रायोरिटी है। एंड इवन अगर आपको याद हो तो पहली स्टेट बन गई है बिहार अभी, जो बात कर रहे हैं कि हम जो इलेक्शंस हैं वो मोबाइल फ़ोन के थ्रू कराएंगे, ऑनलाइन कराएंगे, राइट। आप घर बैठे यहाँ पे ईजिली मोबाइल फ़ोन से वोटिंग कर सकते हो। नेक्स्ट, हु लॉन्च द एक पेड़ माँ के नाम 2.0 इनिशिएटिव अलॉन्ग विद स्पेशल मॉड्यूल्स एंड ईको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ, जो कि है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। इसका वेब पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया। इनिशिएटिव क्या है? एक पेड़ माँ के नाम 2.0 इनिशिएटिव, मतलब एक पेड़ हमेशा अपनी मदर के लिए यहाँ पे हमें लगाना चाहिए ताकि एनवायरनमेंट और बेटर हो सके, करेक्ट, ग्रीनरी बढ़ सके। तो पूछा जा रहा है कि ये वेब पोर्टल,
राइट. हु लॉन्च दिस इनिशिएटिव, एक पेड़ माँ के नाम 2.0 इनिशिएटिव अलॉन्ग विद दिस मिशन लाइफ वेब पोर्टल. तो ये किनके द्वारा लॉन्च किया गया? यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा. नेक्स्ट, what is the revised minimum land required in hectares for setting up semiconductor manufacturing units in multi-product SEZs as per the Special Economic Zones Amendment Rules of 2025 notified by the Ministry of Commerce and Industry in June 2025. तो ये है 4 हेक्टेयर्स, ये है रिवाइज मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट यहाँ पर. नेक्स्ट आ जाते हैं. इन जून किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी पार्टनर किया सेतु आयोग के साथ, जो कि है स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड. यहाँ पे साइन किया गया 3 स्ट्रेटेजिक अग्रीमेंट्स विद टाटा ट्रस्ट, नेस्कॉम एंड वाधवानी फाउंडेशन, जिसका एम रहेगा टू इस्टेब्लिश द स्टेट एज अ हब फॉर डिजिटल टैलेंट एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज. तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे पार्टनर किया सेतु आयोग के साथ? तो ये है उत्तराखंड. ठीक, टेक अ नोट ऑफ इट. फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, किन्होंने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला कमर्शियली अप्रूव्ड यूटिलिटी स्केल 20 मेगावाट बाय 40 मेगावाट पर आवर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, कहां पर? साउथ दिल्ली में इन मई 2025. तो ये दिल्ली पावर मिनिस्टर आशीष सूद के द्वारा इनॉग्रेट किया गया. एंड ये फैसिलिटी साउथ एशिया की लार्जेस्ट ग्रिड कनेक्टेड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट रहने वाला है, जो कि फर्स्ट यूटिलिटी स्केल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम रहेगा, जो कि इंडिया की जो कमर्शियल नीड है उसको पूरा करता हुआ देखेगा. नेक्स्ट, Where did तमिलनाडु गवर्नमेंट नोटिफाइड द क्रिएशन ऑफ ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी, जो कवर करता है 524.78 हेक्टेयर्स ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो कि 5 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं. राइट, आई करेक्ट माई सेल्फ. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व कब करते हैं? यस, 5 जून को ऑब्जर्व करते हैं. राइट, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया क्रिएशन ऑफ द ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी, जो कवर करता है इतने हेक्टेयर्स ऑन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इन जून. तो कहां पर तमिलनाडु में? तो ये रहेगा आपका तमिलनाडु में एर द धनुषकोडी. ठीक है. नेक्स्ट, इन जून गवर्नमेंट ऑफ असम एंड मेघालय ने अनाउंस किया एक जॉइंट इनिशिएटिव, जहां पे 55 मेगावाट का हाइड्रो पावर एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट को एस्टेब्लिश किया जाएगा. किस रिवर पे? कोलसी रिवर पे. एंड इससे दोनों स्टेट्स की जो नीड है, वाटर की नीड है एंड इलेक्ट्रिसिटी नीड है, वो पूरी होती हुई दिखेगी. करेक्ट. एंड इसमें यहीं पे अगर हम देखें तो असम को बेनिफिट भी देखने को मिलेगा कि ये जो एडिशनल इरिगेशन बेनिफिट है वो यहाँ पे असम को देखने को मिलेगा. बट दोनों को यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एंड पानी भी मिलता हुआ हमें देखने को मिलेगा, जिससे दोनों स्टेट्स की नीड पूरी होती हुई दिखेंगी. नेक्स्ट है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन. इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया 2 इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज को, जो कि इस्टेब्लिश की गई हैं एजाइल रोबोट्स SE एंड SOL इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा एट अ कंबाइंड इन्वेस्टमेंट ऑफ 475 करोड़ रुपीज, जिसका एम रहेगा टू स्ट्रेंथन तमिलनाडु's मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम. Next is homework questions, students. First, see, yesterday I gave you such an interesting way of collaborating in the comment section, but hardly any students commented below. I think I have to only give you homework question on daily basis so that you are able to attempt that and benefit from it. So let's move on to it. The first question that I'm asking you, name the chip that was recently launched by Google. Right? It is a very important chip with the computation of which will be enhancing. Second question, name the AI companies recently, right, which are game changer. Give me one important company from China, from USA, and even from India. Third question, recently 2 Indian naval ships, they were commissioned into the Indian Navy. One was developed by Garden Ridge Shipbuilders and Engineers Limited. Another was built by Hindustan Aeronautics Limited. So name those 2 Indian naval ships. Fourth question, who recently won the US Open? Both male and female, or male singles and female singles. Give me both, right? Men singles and female women singles. Then fifth question, tell me recently, if I ask you who has been appointed as the chairperson of SEBI, who he succeeded, right? So these are your important homework questions, students. Now I want maximum participation from all the students.